Good evening, everyone. Welcome to the second last session of differentiation, that is inverse function. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. शायद हमको कल का एक टाइम लगेगा इनवर्स फंक्शन के लिए, एंड देन वी विल एंड विथ डिफरेंशिएशन. नाउ let us begin with derivatives of inverse function. Now, इनवर्स फंक्शन के लिए यहाँ पे तीन पार्ट्स में हम लोग प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर रहे हैं. एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विथ ऑफ इनवर्स फंक्शन या विथ रिस्पेक्ट टू मतलब इनवर्स फंक्शन का रहेगा. दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा. दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सब्स्टिट्यूशन आने वाला है. सो ये तीन पार्ट्स हो गए. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इनवर्स डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स of inverse functions. Okay, derivatives of inverse functions क्या है? Basically what we say is if y is a function of x, y is a function of x, then x becomes inverse function of y. Now if f is inverse function x is inverse function of y and x is also differentiable, then dy by dx can be written as 1 upon dx by dy, or in other words dx by dy can be written as 1 upon dy by dx. So basically अगर हम 1.2 की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली अभी हम there are majorly two like primarily two types of question. I said there are three sections. So before the inverse trigonometric functions, what we have to understand is there are two types of questions in first part. One is find the derivative of the function. मतलब यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव ही निकालने को बोला है, y is equal to f of x using the derivative of inverse function x is equal to f inverse of y. In the right, so यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालना है? y, मतलब dy by dx पूछा है. इन अदर वर्ड्स dy by dx पूछा है with the help of inverse function derivative. So let me take one question. First question, like a simple question I'm taking right now. Y is equal to root of x. Okay, y is equal to अगर root of x है, that means y square can be written as x, right? Y square can be written as x. Okay, in other words x is equal to y square. What does this indicates? This is f inverse of y. तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, dx by dy निकालना है, is equal to 2y. All right, that will be equal to 2y. Now dx by dy, what is y? Y is root of x.
नाउ व्हाट इज dy बाई dx? अपने को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? क्या चाहिए अपने को? dy बाई dx चाहिए, दैट इज 1 अपॉन dx upon dy, that is 1 upon 2 root x. You understand, हम लोग ने रूट ऑफ x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन में लिखा था 1 अपॉन 2 रूट x. यहाँ पे भी वही काम किया है, बट द ओनली डिफरेंस इज विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन. लेट मी टेक वन मोर thing. Let's say y is equal to cube root of x minus 2. So what will be y cube? क्योंकि अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट था, निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ा. This will be equal to x minus 2. That means x is equal to y cube plus 2. ये दिख रहा है अपने को, इनवर्स फंक्शन आ गया. तो लेट मी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y. नॉर्मल जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, बट इस समय x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं. 3y स्क्वायर. नाउ रिमेंबर दैट जो अब तक हम करते आ रहे थे, ये कंपोजिट फंक्शन है क्या? दिस इज नॉट अ कंपोजिट फंक्शन नाउ, बिकॉज हियर x इज अ फंक्शन ऑफ y नाउ, प्लस इसका डेरिवेटिव 0 होगा. ओके, नाउ इसका मतलब क्या हो गया? इधर 3y स्क्वायर आ गया. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? What is the value of y? Now since y is cube root of x minus 2, वहां पे y स्क्वायर चाहिए अपने को. दिस विल बी x minus y रेस टू 1/3, और इसका स्क्वायर निकालना है. सो व्हाट इज y स्क्वायर? x minus 2 raised to 2/3. ओके, सो दैट मीन्स dx by dy का वैल्यू कितना आया? That will be 3x minus 2 raised to 2/3. And what is dy by dx? Because मुझे क्या बोला है? dy by dx निकालना है. And that is 1 upon dx by dy. That will be equal to 1 upon ओके. ना यहाँ पे अभी बेसिक चीजें अगर आपको मालूम है तो प्रॉब्लम सब सिमिलर है. y is log of 2x minus 1. ओके, ना क्वेश्चन में क्या बोला है? dy by dx से निकालना है, बट विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन. सीधा नहीं निकालना है. ओके, तो सी बेसिकली इफ log x इज इक्वल टू y, तो x का वैल्यू क्या होता है? e रेज टू y होता है, राइट? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ log. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर ये log x है, what will be 2x minus 1 is e raised to y. So what is 2x plus 1? डिवाइडेड बाय 2 हो गया. अब मुझे क्या करना है? एज यूजुअल, दिस इज f इनवर्स फंक्शन ऑफ y मैंने लेके आया. ओके, नाउ दिस इज 1 अपॉन 2, डेरिवेटिव लेना हो. e रेज टू y का डेरिवेटिव e रेज टू y प्लस 0 हो गया. सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू y अपॉन 2. ठीक है, वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ e raised to y. Now in this case it is very easy. This is 2x minus 1 divided by 2. क्वेश्चन क्या है?
dy by dx निकालना है, दैट इज 1 अपॉन dx by dy. इसका रेसिप्रोकल लेना है, सो माय आंसर इज 2 अपॉन 2x माइनस 1. ओके, वन मोर प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इसका. लेट मी टेक वन मोर प्रॉब्लम. ओके, y is equal to e raised to 2x minus 3. ओके, नाउ इसको और कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है. log y is 2x minus 3 log e. आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये डेफिनेशन है इधर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. e रेस टू y इज x है तो log x इज इक्वल टू, ये सब कर सकते हैं. नहीं समझ में आया तो सिर्फ log ले लेते हैं दोनों बाजू में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log y is 2x minus 3 बिकॉज log e का वैल्यू 1 होता है. सो वी हैव 2x is equal to log y plus 3 and x is equal to 1 by 2 log y plus 3. तो हमने कन्वर्ट किया इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको. तो पहले मैं dx by dy निकालूंगा, दैट इज 1 अपॉन 2 log y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 अपॉन y प्लस इसका वैल्यू 0 है. व्हाट इज 1 अपॉन y, dx by dy 1 अपॉन 2, y का वैल्यू कितना है, e रेज टू 2x माइनस 3. व्हाट इज dy by dx. सो आई थिंक पहला प्रॉब्लम जब हम कर रहे थे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, बट नाउ बिकॉज वी हैव डन so many problems, now it is a easy part. Alright, so this is how. क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन समझ के ले लो. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x. दैट मीन्स यहाँ पे dy by dx निकालना है, बट यूजिंग इनवर्स फंक्शन. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन 2 नाउ. यहां पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, the derivative of inverse function. Okay, now first one, a normal problem जो हमने लास्ट ईयर में सॉल्व किया था. ये सारे नॉर्मल प्रॉब्लम्स है. ओके, नाउ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ना रिमेंबर, ये जो फर्स्ट पार्ट किया था यहाँ पे dy by dx निकालना था यूजिंग इनवर्स फंक्शन. यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पूछा है, तो यहाँ पे सीधा मैंने डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो dy by dx क्या होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये u है और इंटू v है. ओके, dy by dx is u into derivative of v plus v into derivative of u. So this is x square into derivative of e raised to x is e raised to x. Again, e raised to x, derivative of x square is 2x. So what is dy by dx? Now what can be done over here? x e raised to x को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x plus 2. Now this is dy by dx, this is dy by dx आ गया. बट क्वेश्चन क्या पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. दैट मीन्स ही इज आस्किंग फॉर dx by dy. राइट, दैट इज 1 अपॉन dy by dx
that means it is 1 upon x e raised to x into x plus 2. बस इतना ही करना है, राइट? तो आज वैसे इनिशियल पार्ट में कुछ नया नहीं है यहाँ पे. ओके, नाउ let me take one more problem. Y is equal to x cos x. Okay, differentiating with respect to x, right? यहाँ पे u into v दिख रहा है, x into derivative of cos x plus cos x into derivative of x. डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x है, प्लस cos x, डेरिवेटिव ऑफ x is 1. Okay, so what is my dy by dx? dy by dx is cos x minus x sin x. Okay, क्या पूछा है, क्या बोला है मुझे निकालने को? मुझे बोला गया है फाइंड आउट dx by dy बिकॉज इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. दैट इज 1 अपॉन दैट्स इट. ये हो गया. One more, the last problem from this. So y is given to us as x square plus log x. Okay, the question is find the derivative of inverse function. तो मैं क्या करूंगा? First differentiating with respect to x, dy by dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल u प्लस v है, आसान है प्रॉब्लम. सो u का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. काम हो गया. नाउ what we are supposed to find out, this can further be written as 2x square plus 1 upon x. Okay, now dx by dy, derivative of inverse function चाहिए मुझे. That is 1 upon dy by dx. Now that is equal to, इसका reciprocal आएगा and x upon 2x square plus 1. Okay, now so this is the first part जहाँ पे normal functions दिए हुए हैं. Okay, wait a minute, one more problem from this type. Find the derivative of inverse function. Inverse function मतलब dx by dy चाहिए अपने को. And find value at the point indicated. ठीक है. So let me take, there are we'll take two problems, two simple problems. So first one is very simple. Y is x raised to 5 x equal to 1. Okay, now first of all I'll find out dy by dx. Plus 6x square plus 3. सिंपल हमने डेरिवेटिव निकाल दिया.
अपने को क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन चाहिए. नाउ dx by dy is 1 upon dy by dx. अच्छा, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया मेरे पास. dx by dy is 1 upon 5x raised to 4 plus 6x square plus 3. Right? Now question is dx by dy at x equal to 1 चाहिए मुझे. At x equal to 1. तो मतलब क्या करना है, बस और कुछ नहीं करना है. dx by dy निकाला है, उसमें x के बदले 1 सब्स्टिट्यूट करना है. Okay, now this becomes 1 upon 14 is the answer. Let me take one more problem. Sine of x minus 2 plus x square at x equal to 2. Okay, now what will happen? Differentiating with respect to x. So I'll find out dy by dx first. That's the how it goes. So sine का डेरिवेटिव cos होता है. ओके, बट cos x के बदले कुछ और था, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा. सो व्हाट इज dy by dx? x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस 2x हो गया. अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए dx by dy. इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए मुझे. dx अपॉन dy इज 1 अपॉन dy by dx. टू एक्स. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है? वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2. तो क्या हो जाएगा इसमें? x इक्वल टू 2 लेना है, तो बस x के बदले 2 को रिप्लेस करना है. दैट इज 1 अपॉन cos 0. 1 upon cos 0 plus 4. What is the value of cos 0? That is 1 plus 4. So मेरा dx by dy at x equal to 2 will be 1 upon 5. Okay. One last question of this type. Yeah, because ये आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझ के लेना है, but otherwise it's very easy. The question is थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं ये ले रहा हूं, बट अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इफ f of x is x cube plus x minus 2, find f इनवर्स उसका डैश ऑफ माइनस 2. ओके, नाउ f इनवर्स डैश मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव यूजुअली विथ रिस्पेक्ट टू डैश ब्रैकेट में y होता है, बट यहाँ पे y के बदले -2 आया है यहाँ पे, राइट? या फिर नाउ लेट मी चेक कैसे कर सकते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल this is f of x is given to me as x cube plus x minus 2. तो f dash x क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f dash of x is 3x square
प्लस 1, राइट। -2 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, राइट। एफ डैश ऑफ y क्या हो जाएगा, 1/f(x), राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 1/3x² प्लस 1। ऑलराइट, नाउ रिमेंबर, ये जो हमने निकाला है यहाँ पे y होगा, y, तो y का वैल्यू कितना है, -2 है, ओके। नाउ सो सॉरी, सो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं, एक्सक्यूज मी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं, तो व्हेन y इज इक्वल टू -2, राइट, ये y का ही वैल्यू है, ओके। व्हेन y इज इक्वल टू -2, इसका मतलब x³ प्लस x -2 इज इक्वल टू -2 हो गया, -2 कैंसिल हो गया, x³ इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ओके। ना नेचुरली x का एक ही वैल्यू आएगा 0, बिकॉज x² प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो वो रियल वैल्यूज नहीं आता है, तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 0। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, f डैश ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स डैश, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y का मतलब यहाँ पे -2 है, दैट विल बी इक्वल टू 1/f डैश ऑफ 0। सो दैट मीन्स f डैश ऑफ 0 मतलब क्या हो जाएगा, x के बदले 0 आ जाएगा, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, दिस विल बी द आंसर, ओके। नाउ I'm giving you the title, the second part, today's second part, derivatives। अब इसका प्रूफ वगैरह सब है जो नहीं आने वाला है, ओके। हमको सिर्फ हम उसके टेक्निकल पार्ट में नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो inverse trigonometric function, I'm not getting into the technical part of this, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। आज का लेक्चर और कल के लेक्चर में मुझे चैप्टर खत्म करना है, ताकि आपको मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे लेके जाऊं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 6 मार्क्स मिलेगा आपको, एंड उसके बाद अगेन LPP, ओके। नाउ सो आई मेक 2 कॉलम्स, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, पहले क्लास में किए थे हम लोग, ओके। सो f of x and the other column is f dash of x, okay, one by one. First one, sin inverse of x, if this is there, uska derivative hai 1/√1 minus x square, okay, provided mod x is less than 1. Second, cos inverse x, this is -1/√1 minus x square. दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं आपको पूरा इसका प्रूफ एंड टेक्निकल पार्ट एक्सप्लेन करूं, सो वी आर जस्ट टेकिंग द फॉर्मूलाज। tan इनवर्स ऑफ x is 1/1 plus x square. Cot inverse of x is -1/1 plus x square, okay. Now the fifth one is sec inverse
Now here mod of x जो भी है that has to be greater than 1. And the last one, you must have understood cosec inverse of x. This is 1 upon x into रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. देयर इज अ मिस्टेक यहाँ पे, माइनस चाहिए, वहां पे ग्रेटर देन 1 हो गया. ऑलराइट. और इसके साथ साथ इसमें कंपोजिट फंक्शन आएगा. तो कंपोजिट फंक्शन आपको मालूम है, हमने किया है. तो इसके साथ अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग लेंगे. सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Okay, the first part. Sine inverse of sine theta is equal to theta. First one. Second one, cos inverse of cos theta is equal to theta. Might sound boring, but मालूम होना चाहिए. That's the reason we are writing this. Tan inverse of tan theta is theta. Naturally, fourth one, cosec inverse of cosec theta. Then the fifth one, and the sixth one is cot inverse of cot theta is equal to theta. All right. The second part of this is, उसमें first, sine of sine inverse x is naturally x. Again, you might feel like it's a boring process, but yes, we have to understand this. This is x. Third part, is equal to x. Fourth one, cosec of cosec inverse x is x. Fifth one, sec of sec inverse x is x. Sixth one is, of course, cot of cot inverse x is equal to x. Let me take the third part. Now this is interesting. It is related to the first part that we have done. If it is sine inverse of cos theta, okay, now that is equal to sine inverse of cos theta is sine of pi by 2 minus theta, and that is equal to pi by 2 minus theta. इसी तरीके से this, if this is the first one, the second one will be cos inverse sine theta. So that will be equal to pi by 2 minus theta. Similarly, third one is tan inverse of cot theta. Same way, pi by 2 minus theta. Then the fourth one, cosec inverse of sec theta
is equal to pi by 2 minus theta. Fifth one, sec inverse of cosec theta is equal to, this can be written as sec inverse of sec pi by 2 minus theta. Okay, and that is equal to pi by 2 minus theta. And the last one in this series is cot inverse of tan theta is pi by 2 minus theta. Okay, now it's not over. The fourth part. The fourth part is sine inverse of minus x is minus sine x. Second, cos inverse of minus x is pi minus cos x. This is something very different. Tan inverse is minus tan x. Okay, the fifth one is sine inverse of 1 upon x is equal to cosec inverse x. Naturally, cos inverse 1 upon x is sec inverse x. Tan inverse of 1 upon x is cot inverse x. Fourth one, cosec inverse 1 upon x is naturally sine inverse x, then sec inverse cos inverse x. And the sixth and the last one is tan inverse of x. The sixth one, साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रूफ भी है हमारे सिलेबस में. कॉस इनवर्स एक्स is equal to pi by 2. This can be proved with the help of derivatives again. Sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2. Sorry. Tan inverse x sorry, the last two, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Minus tan inverse y
is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. These are some facts which belongs to actually trigonometric function. इसका differentiation का part बाद में आएगा. So as I said, inverse functions में तीन पार्ट्स है. वन इज इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने जो अभी किया था थोड़ी देर पहले. सेकेंड इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो अभी हम करने वाले हैं. एंड द थर्ड वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन का पार्ट, राइट, which we might do it tomorrow. Okay, now let us begin with few problems. टाइम कम है बट जितना हो सकता है उतना आज कर लेंगे. रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इट टुमारो. Okay, now क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट with respect to x. Question 1. Tan inverse of log x. Okay, now let us say that y is equal to light लाओ ना, light लाओ ना, light. Let y equal to tan inverse of log x. Okay, now as usual normal process, बाकी अब सब सेम है. differentiating with respect to x. Now understand that यहाँ पे he has not said कि find the derivative of inverse function. He said differentiate with respect to x. That means dy by dx निकालना है. So dy by dx. Okay, now tan inverse x का डेरिवेटिव क्या था? tan inverse x का डेरिवेटिव है 1/1 plus x square. Okay, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? x के बदले क्या है? log x है. तो मैं यहां तो लिख दिया हूं 1/1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर. एक्स के बदले लॉग एक्स आया, लेकिन जो एक्स के बदले आता है उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स. ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x 1 प्लस log x whole square. Let me try few more problems. Okay, the question is cosec inverse e raised to minus x. Okay, now let me say that y is cosec inverse e raised to minus x. dy by dx is कोसेक इनवर्स एक्स है. अगर मान लीजिए कोसेक इनवर्स एक्स है तो डेरिवेटिव क्या है? कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे कंडीशन डाला था मॉड एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. सो हियर इट विल बी 1/, अच्छा x के बदले क्या आया? e रेस टू माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ e रेस टू माइनस 2x माइनस 1. करेक्ट है? बिकॉज यहाँ पे क्या था?
ई रेस टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ इज I have to find out the derivative of e raised to minus x. Now, dy by dx is e raised to x first, यहाँ पे, okay, 1 upon e raised to 2x minus 1 multiplied by e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि e raised to x का डेरिवेटिव है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके. Now what happens is e raised to x into e raised to minus x is 1 in the denominator, 1 minus e raised to 2x upon e raised to 2x into minus 1. Okay, now this means minus 1 upon root of 1 minus e raised to 2x divided by e raised to 2x. So dy by dx, my final answer is minus e raised to, I'm so sorry, here it is, when we take the root, what remains is e raised to x. It is taken outside the root. So minus e raised to x upon root of 1 minus e raised to 2x. ओके, सो सिंपल से प्रॉब्लम है आज जो कर रहा हूं मैं, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. लेट मी टेक वन मोर प्रॉब्लम. सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है हम कल लेंगे, सो दैट द कल ये पूरा कर देंगे. साइन इनवर्स x raised to 3 by 2. Okay, now let me take sine inverse x raised to 3 by 2. Okay, now differentiating with respect to x, dy by dx is 1 upon साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x is 1 upon root of 1 minus x square. So what will happen to this problem? 1 upon root of 1 minus, ओके, x रेस टू 3 बाई 2 है, x के बदले क्या है, x रेस टू 3 बाई 2 उसका स्क्वायर, एंड एट द सेम टाइम मेरा काम है यहाँ पे x रेस टू 3 बाई 2 का डेरिवेटिव लेना. ऑलराइट, सो दिस बिकम्स this is dy by dx is equal to 1 upon root of 1 minus x cube into इसका डेरिवेटिव x रेस टू n है, x raised to n minus 1. So this is dy by dx 1 by 1. देखो यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, राइट, x रेस टू 3 by 2 minus 1 का मतलब है x रेस टू हाफ. नहीं समझा है तो यहाँ पे देख लो, 3 by 2 minus 1 will be 3 minus 2 upon 2, which is 1 upon 2. Okay, now root x divided by root of 1 minus x cube. ओके, इन अदर वर्ड्स फाइनली ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज, यहाँ पे 2 है, सॉरी, 3 अपॉन 2 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x क्यूब. It can be written in this manner. All right, now fourth one.
some interesting part now, cos क्यूब. तो कल का हम सिर्फ रखेंगे सब्स्टिट्यूशन. Okay, so I'll take let y equal to cos cube cos इनवर्स. ओके, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, या फिर दिस cos of cos इनवर्स x is x. तो जस्ट मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको आपके सामने रखता हूँ. दिस इज cos of cos इनवर्स x क्यूब. द होल थिंग क्यूब है वहां पे. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x क्यूब रहेगा. cos of cos इनवर्स ऑफ x इज x और रेस टू 3b है, सो दिस इज x रेस टू 9. तो मेरा असली क्वेश्चन है ये. नाउ क्या है, अभी काम सिंपल है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx 9x raised to 8. Yes, I have written this, Sandhya. If यहाँ पे, if you are talking about this problem, I have written this. See, it is x root of x square minus 1. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x के बदले क्या e रेस टू माइनस एक्स है, उसका स्क्वायर e रेस टू माइनस 2x minus 1, right? Now this e raised to minus x goes up and derivative of e raised to minus x becomes e raised to minus x into derivative of minus x. I hope, Sandhya, you are understanding this. Right, Sandhya, look at this. This is cosec inverse of x. So 1 upon x root of x square minus 1. Right? Now everything is fine? Good. The fifth one. No problem, Sandhya. So while solving also, I make some mistakes sometimes. So that is okay. Cot inverse of cot. Okay. So a very simple question, a direct question. Let us say that y is equal to cot inverse. Very simple and straightforward question. E raised to x square. Okay. Cot inverse of cot theta is theta. तो ये आ गया तेरा. Okay. So क्या करना है अभी मुझे, differentiating with respect to x. So dy by dx is e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है, बट x के बदले क्या है वहां पे, x square है. So I have to take a derivative of x square. So what is dy by dx? That is x square का डेरिवेटिव 2x into e raised to x square. Okay, next one. Number 6.
cosec inverse 1 upon cos 5 raised to x. Okay, let me say that पहले तो ये ले लेता हूँ, let y is equal to cosec inverse. Now 1 upon cos of 5 raised to x. Okay, now y is equal to cosec inverse 1 upon cos क्या होता है, sec होता है 5 raised to x. अच्छा, ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, बट फॉर्मूला अगर बाय हार्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे करूंगा कि sec of theta is cosec pi by 2 minus theta. थीटा के बदले मैं यहाँ पे आई एम जस्ट रिपीटिंग द फॉर्मूला. So sec of x is cos pi by 2 minus x. So cosec inverse of cosec is pi by 2 minus 5 raised to x. Differentiating with respect to x, what we get it as is dy by dx. pi by 2 तो कांस्टेंट बन गया. 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स log 5, बिकॉज a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आता है a रेज टू एक्स की डेरिवेटिव इज a रेज टू एक्स log a. So finally my answer is minus 5 raised to x log 5. Number 7. Cos inverse root of 1 plus cos x upon 2. राइट, इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन में भी बहुत बार ये प्रॉब्लम आएगा. cos इनवर्स, ये क्वेश्चन है मेरा, 1 प्लस cos x अपॉन 2. सो व्हाट इज y? cos इनवर्स. What is 1 plus cos x? That is 2 cos square x by 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 2. राइट, 2 कैंसिल हो गया. ओके, एंड y इज इक्वल टू cos इनवर्स. अच्छा, अंडर रूट ऑफ cos square x by 2 becomes cos x by 2. ठीक है, एंड cos इनवर्स ऑफ cos is what remains is x by 2. डिफरेंशिएटिंग, अब मेरे पास कोई काम बचा नहीं है तो मैं एक ही काम करूंगा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So dy by dx is 1 upon 2. Okay, let me go for a couple of more problems. थोड़ा extend करते हैं because कल खत्म करना है अपने को. tan inverse, again it's a well known problem, ये बार बार आएगा आपकी जिंदगी में. 1 minus tan x by 2, 1 plus tan x by 2. अगर आपने इंटीग्रेशन किया है बाय एनी चांस तो आपने इसको बार बार देखा होगा ये प्रॉब्लम को. लेट मी टेक y एज tan inverse 1 minus tan x by 2
1 plus tan x by 2. ओके, नाउ दिस एडजस्टमेंट जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है एक्चुअली। ये एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, यू मस्ट हैव सीन दिस प्रॉब्लम अगर आपने कहीं इंटीग्रेशन किया है। सो दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 पाई बाई 4 माइनस 1 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट देखो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरस्टैंड करना। 1 प्लस दिस इज सपोज टू बी 1 इंटू टेन एक्स बाई 2। तो 1 क्या होता है? 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई 2, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू, you observe this, tan a minus tan b। किसका फॉर्मूला है? tan a माइनस b का। क्या फॉर्मूला है? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ओके, ये दिख रहा है अपने को सामने। सो दिस इज tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या है, इतना हो गया तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan, मतलब क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx। पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है, सो दिस बिकम्स -1/2। Let me do something. Okay. Cot inverse. This is also a well-known problem. We have seen this type of problem many times in integration also. And also, if you go back to 11th standard, this is a well-known problem from uh, trigonometry. Especially, I'm talking about the bracket which is there. Cot inverse sin 3x upon 1 plus cos 3x. Okay, so this can be written as half angle formula hai. Half angle formula, sin 3x is 2 sin 3x upon 2 cos 3x upon 2. Okay, I will write the formula over here. Half angle formula kya hai? Sin A is 2 sin A by 2 into cos A by 2। दूसरा हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस ए, अभी अभी पिछले वाले प्रॉब्लम में भी यूज किया था, 2 cos स्क्वायर A by 2। Okay, so this becomes in the denominator again 2 cos square 3x upon 2। Now, let us see this। 2 तो कैंसिल हो गया, cos 3x by 2 एक चला गया, तो मेरे पास क्या बचा? y is equal to cot inverse sin 3x by 2 upon cos 3x by 2 is tan 3x by 2। ओके, अभी अभी देखा था हमने tan 3x by 2 है, बाहर cot है, तो क्या करना चाहिए अपने को? दिस कैन बी रिटन एज cot ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3x अपॉन 2। ओके, सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot निकल गया वहां से, पाई बाय 2 माइनस
3x upon 2. Differentiating with respect to x, dy by dx is पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0 होता है माइनस x का डेरिवेटिव 1. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3/2. One last problem. And then we will stop. This is tan inverse. So all these problems, if you have solved integration ना, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व किया है तो अगर ये सॉल्व कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का वो पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है. ओके, तो अभी नहीं किया है तो करने का सोच सकते हो आप. ओके, सो लेट मी से दैट tan inverse cosec x प्लस tan x. ओके, ऐसे समय पे जब ट्रिग्नोमेट्री आती है तो if you are not able to do anything, just do whatever you can do. तो एक ही चीज कर सकता हूँ, सब कुछ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. sin x अपॉन, अच्छा मैंने एक गलती किया यहाँ पे कॉट चाहिए. This is cot x. So this becomes cos x upon sin x. So what happens is y is equal to tan inverse 1 plus cos x upon sin x. So y is equal to tan inverse. अभी जो प्रॉब्लम किया था वही काम वापस कर रहे हैं. This is 2 cos square x by 2. Sin x is 2 sin x by 2. Cos x by 2. 2 gets cancelled. Cos x 1 gets cancelled. So what remains is y is equal to tan inverse of cot x by 2. अपने को क्या करना चाहिए यहाँ पे, y is equal to tan inverse cot है तो this can be written as tan pi by 2 minus x by 2 and hence y is equal to this, ये निकल जाएगा अभी. So this equal to pi by 2 minus x by 2. What we can do is differentiating with respect to x, dy by dx is pi by 2 का डेरिवेटिव 0 है minus 1 by 2. So my answer becomes minus 1 by 2. ओके, आई वुड रिपीट, ये अगर कर रहे हो आप लोग, ये अगर अच्छा लगा है तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में भी है तो वो भी कोशिश कर सकते हो. फिलहाल के लिए इसमें अभी 2-3 प्रॉब्लम्स अभी बाकी है जो मैं करना चाहूंगा. एंड कल हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे. हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने की कैसे करना है वो सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम कल करेंगे, राइट. एंड टुमारो विल बी द लास्ट सेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का अभी एक ही चीज बचा है, थियरम्स. एंड थियरम आर गोइंग टू कम. उसमें से एक थियरम तो मैंने ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन का आपको सिखा दिया है. बाकी के थियरम्स के लिए एक अलग लेक्चर लूंगा मैं. बट लेट मी गो बैक टू, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने को वंस वी फिनिश पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड एलपीपी. तो वो 10 मार्क्स और सिक्योर हो जाएंगे, राइट. सो see you tomorrow then at 9 o'clock in the night. Okay,
and we will finish the chapter. Okay. Thank you very much. Sandhya, you are from which classes, if you don't mind, or who referred you for this? Chalo, bye bye then. Good night. Take care and see you tomorrow then. Bye bye.